तो ये दोनों एक्सपर्ट लेक्चर है, जस्ट यू पीपल नीड टू गो थ्रू इट। और एक सेकंड, अपने स्टूडेंट कितने हैं ये में, वो 2 क्लास के मिलके वो पता चल सकते हैं? 2 क्लास के मिलके पता चल सकता है। अभी अपने अटेंडेंस में है 69। रोल कितने स्टूडेंट है अपने पास एग्जैक्टली? डबल डबल आवाज आती होगी इसको। करीबन 180 जितने तो होंगे। 180। और दूसरी चीज, last time Dhruval told that every continuous function is not differentiable, is correct. I am wrong at that point of time. उसके बाद मैंने थियरम पढ़े, और जो मोड ऑफ एक्स उसने बोला था वो अपन बाद में करेंगे, अभी सब लोग आ जाने दो उसके बाद। सो ध्रुवल, एक चीज है, तुम लोगों का एक कॉमन ग्रुप है अपने पास? हाँ सर है। तो उसमें उस लेक्चर का जब अपन 1:30 बजे तो वहां पे रिमाइंडर डाल सकते, मतलब आप लोग मैसेज कर सकते हो कि ये लेक्चर है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा ध्रुवल, प्रॉब्लम कि हम वेट करते रहेंगे, उससे अच्छा है अपन टाइम पे स्टार्ट कर दे तो टाइम पे खत्म कर सकते हैं। और मेरे को ये करवाना है, आपसे इंटरेक्ट करवाना है प्रोफेसर से, राइट? तो इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लीव इट, हम कंसेप्चुअल चीजें सीखते रहते हैं लाइफ में, समझे? तो 1:30 बजे मैं तुम्हें बोलूंगा लैब में, एक बार सबको मैसेज तब डाल देना जिसमें मैंने लिंक और वो भेजा है आपको मेल में कल, तो हम डायरेक्टली वो कर सकते हैं। और ध्रुवल एक काम और भी करो ना, कि तुम्हारा ये ग्रुप होगा ना क्लास का, तो एक एआई का पूरा ग्रुप बना देना जिसमें मेरे को भी ऐड कर दे, तो डायरेक्टली ऐसा कुछ होगा तो हम ही वहां पे डाल देंगे। नहीं तो मैं आपको कर दूंगा, आप मेरे को खाली मैसेज कर दो तो मैं तुझे डाल दूंगा भाई, और तू उनको डाल देना, ऐसा करना हो तो वैसा भी कर सकते हैं। तो 180 जन है। हाँ बोल बोल बोल। अभी मतलब थोड़े दिनों पहले मेरा फोन रीसेट हुआ है, तो कई सारों के कॉन्टेक्ट चले गए हैं, तो 133 सौम्य के पास होगा, लाइक उनके पास सबके कॉन्टेक्ट होंगे। એમ નહીં, હું તને મોકલીશ, તું સૌમ્યને મોકલી દેજે। ઇન શોર્ટ આપણે કોલેબોરેટિવ કામ કરવાનું, બરાબર? બીજું કઈ નહીં, કેમ કે એટલીસ્ટ આપણાને જ્યારે કોઈ બી વસ્તુ થતી હોય, હું એટલે કહું છું કે ઓબ્વિયસલી લેક્ચરથી તમે બોર થઈ જતા હો કે એક્સપર્ટ લેક્ચરમાં એક્સપર્ટ બોલ્યા કરે, બટ વી મોર નીડ ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધેમ। જો ઇન્ટરેક્શન કરવાથી બહુ બધી વસ્તુનું સોલ્યુશન મળે, એવું ના હોય કે બધી જ વસ્તુનું સોલ્યુશન લેક્ચરમાં મળી જાય, ના હોય। કંઈક આઈડિયા મળે, 5th સેમેસ્ટરમાં છો, પ્રોજેક્ટ કરવાનું છે। Koteja Saab was my director at Nirma, and now he is working as the dean director at Symbiosis International University, right? तो सर को सामने से मैंने वो टॉपिक दिया कि वो टॉपिक उन्होंने हमको पढ़ाना शुरू किया था, तो एटलीस्ट यू पीपल गेट 2 डिफरेंट फ्लेवर ऑफ द पर्सन, कि एक ही टॉपिक है, 2 अलग अलग बंदे पढ़ाते हैं, तो आपको पता चलेगा क्या अलग अलग चीजें दिखाते हैं। इसके लिए मैंने बोला कि आप सबको पता है या नहीं पता आज का लेक्चर, क्योंकि अगर पता नहीं होता है, अभी भी 99 स्टूडेंट ज्वाइन हुए। चलो 1 मिनट बाद हम चालू करते हैं, ठीक है? कल सुबह मॉर्निंग में लेक्चर है, उसका मेल मैं आज करूंगा। ओके सर। तो मॉर्निंग में हमारा जो लेक्चर होता है, आप लोगों का लेक्चर 11 बजे होता है ना कल, के सुबह होता है? अगर सुबह है या 11 बजे है, पर हम एक्सपर्ट टॉक करने वाले हैं, तो हम उसी में कल होंगे। सो जस्ट आपको ये केयर करनी है, मेरे लिए इतना करना है, सुबह आपको सबको बता देना है, राइट? So last time we started with genetic algorithm, but now I will teach you genetic algorithm after Koteja says lecture, because वो मान गए कि आपको lecture देंगे। So last time we are discussing about continuous function, because he told that fx is equal, this is the mode x function, अगर उसको plot करें तो ये था। तो reason यहाँ था कि if you want to find it out the differentiation of the function, you need to find it out the limit of right hand side and the left hand side. For this function, your limit are different for this in this.
हाँ, पर अब मैंने स्टेटमेंट इसलिए चेंज किया क्योंकि मैंने मैथ्स का थियरम पढ़ा ध्रुवल के कहने के लिए, और मैं गलत था, ध्रुवल नहीं, दैट्स व्हाई आई एम सॉरी अबाउट इट. बट नाउ एवरी डिफरेंशियल फंक्शन, if you find it out differentiation of any function, that function is continuous. If your function is differentiable, then it is continuous. Then it is continuous. Because honestly, why we need to learn such type of algorithms and all the things? That's why I focus upon on differentiability. Because if you talk about this is the one of the function where we cannot had a differentiation though it have a continuous point. But the people are true with the theorem, so I cannot argue with it. The people are correct about it because they are the mathematician, right? But honestly, think about it. We every time machine learning talk about such type of functions, right? Or in maths, we are having this function, polynomial function, exponential function. All quadratic function are the continuous function, right? So for such type of function, if you want to find it out the solution, what we are going to do, that we need to understand. हम एक आज तक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन टेक्निक्स में ग्रेडियंट बेस्ड लर्निंग यूज करते थे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. Optimization techniques also here we start about today. I think swarm intelligence हम start कर सकते हैं. Then we shift to particle swarm optimization because Koteja sir will teach you the ant colony and genetic algorithm. Then we will start about it. Ant colony, I will give you the brief introduction about it. Then you can understand it. The swarm intelligence. Have you seen ever the whenever the bird is going, when sunset happen and bird is going in one pattern to their home? वो देखा है कभी भी आप लोगों ने? कभी भी पक्षी घर पे जाते हैं शाम को तो एक पैटर्न बनाते हुए जाते हैं, देखा है हमने? यस सर. वो आप लोगों ने एक हमेशा ऐसा देखा होगा, कभी भी फ्री हो और हमने देखा हो, ऐसा नहीं कि ध्यान से देखना है, पर दे पीपल आर डूइंग समथिंग. आपने वो कभी भी देखा? तो बेसिकली स्वार्म इंटेलिजेंस the person had invented and he told about this has been collective effort. This basically emerged. If you talk about the intelligence, then it's been emergent of collective of agent. Here the agents are your birds, right? The collective. In this there is no centralized authority for such type of algorithm. Please understand it. आप लोगों ने जो पक्षी को घर जाते हुए देखा उसमें एक लीडर था, ऐसा देखा कभी? कोई एक लीडर है ऐसा देखा है कभी भी? और इफ यू टॉक अबाउट योर आंट, घर पे चींटियां देखी होगी, उसमें कोई लीडर है ऐसा कभी भी देखा है? यस सर. लीडर होता है चींटियों में? क्वीन एंड होती है ना. वो क्वीन एंड तो मेरे को नहीं पता यार. वो लाल चींटी की बात कर रहे हैं? फूड सोर्स कोई भी एंड होती है ना, उसमें एक क्वीन होती है. मतलब जहाँ पे वो जाते हैं, बीज में भी ऐसा होता है. ओके, वो मेरे को नहीं पता था. जो मेरे को पता है वो मैं बताऊंगा. तो मतलब वो ये आप वही कहना चाह रहे हैं कि अगर एक उसके पीछे सब जाएंगे, जैसे अगर हम क्वीन एंड क्वीन बी को हाँ हमारी वो कलेक्ट. आर्मी ले लेंगे ना, तो वो सब बीज उधर आ जाएगी, ऐसा होता है. और हमारे पास ऐसे ऐसे दो तीन रास्ते हैं. ये एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है, ये चौथा रास्ता है, राइट? अब हमारे पास यहाँ पे आंट्स है. मैंने फूड सोर्स लिखा है, मतलब वहां पे कुछ भी खाना है और उनका ऑब्जेक्टिव है मेरे को खाने तक पहुंचना है, राइट? अब एक चीज है, ये बात यहाँ तक आते होंगे ऐसा अज्यूम कर लो. अब इतने सारे पाथ है तो ऑब्वियसली सब लोगों को ऐसा लगता होगा कौन सी जगह पे आंट जाएगी. सपोज यहाँ से एक आंट ने जाना शुरू किया, दूसरी आंट ने किया, एक ने यहाँ से शुरू किया, एक ने यहाँ से शुरू किया, एक ने यहाँ से शुरू किया, एक ने यहाँ. और बेसिकली इन बायोलॉजिकल सेंस जब भी आंट कहीं पे भी ट्रैवर्स करती है वो एक लिक्विड ड्रॉप करती जाती है.
जिसको फेरोमोन्स कहा जाता है, ये इवोपरेट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। वो लिक्विड ड्रॉप करती जाती है, जाती 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 है, और उसके बाद जब भी थोड़ा टाइम होगा वो इवोपरेट हो जाएगा, वहां से गायब हो जाएगा, राइट। इन biological term they consider this as chemical that is dropped by the ant. अब सोचो ये रास्ता बहुत लंबा है, अगर एक ही आंट वहां पे गई, उसने यहाँ से शुरू किया 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 यहाँ तक, तो यहाँ से तो ये केमिकल इवोपरेट हो ही जाएगा हमारा, राइट। इसका टास्क है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना, जहां से सारे आंट ट्रेवर्स करेगी, पर उनको मैसेज भी पहुंचना चाहिए ये पाथ शॉर्टेस्ट है। ये भी तो ऑब्जेक्टिव है हमारा, बिकॉज वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं एग्जैक्ट इन द सेंस आई डोंट नो अबाउट इट, बट मेरे को अगर मैसेज पास करना है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, और ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है वो भी डिराइव करना है। इंसान होता तो हम मैसेज वहां पे लिख सकते थे, आंट के लिए तो मैसेज नहीं लिख सकते हम लोग, राइट। तो एक चीज है, यहाँ से चलना आंट ने शुरू किया, आंट ने शुरू किया, राइट। धीमे धीमे करके जिस भी पाथ पे आंट ज्यादा जाना शुरू करेगी, मतलब नंबर ऑफ आंट्स, वहां पे लिक्विड बढ़ता जाएगा। क्यों? एक गई, उसके बाद दूसरी गई, उसके बाद तीसरी गई, उसके बाद चौथी गई, उसके बाद पांचवी गई, उसके बाद छठी गई। मतलब अब सबको पता चलने लगा मेजोरिटी ऑफ आंट इज गोइंग इन दैट पाथ। उनको कैसे पता चला? वहां पे उनको फेरोमोन्स मिलता है, दिस फेरोमोन्स इंडिकेटिंग दैट यहाँ से आंट जा रही है, क्योंकि वहां पे वो लिक्विड मिलता है, दूसरी जगह इवोपरेट हो, एक गई होगी, दूसरे किसी ने भी वो आंट ने वो पाथ फॉलो नहीं किया, तो वहां से इवोपरेट हो जाएगा, राइट। अब इवोपरेट हो गया, उसका मतलब यहाँ से कोई नहीं गया। प्लीज कंसिडर दिस एज अ रियल सेंस एग्जाम्पल। जहां पे फेरोमोन्स उड़ गया है, मतलब ये पाथ कोई भी प्रेफर नहीं कर रही है आंट, इसकी वजह से यहाँ पे कोई नहीं है। 10 गए, 15 गए, 20 गए, एक ही पाथ से जाने लगेंगे, तो ऑब्वियसली हर एक अपना केमिकल ड्रॉप करते जाएंगे, और जैसे जैसे ज्यादा लोग जाते जाएंगे उसी हिसाब से उन लोगों का कम्युनिकेशन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं राजा हूं, मैं सबको बोलूंगा इसी साइड से चलो तो आप लोग चलने लगोगे। यहाँ कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं थी हमारे पास। हमारे पास सिर्फ एक केमिकल था जिसकी वजह से हमको पता चलता था कि हाउ मेनी आंट हैड फॉलोड दिस पाथ। हमारे पास आंट का हमेशा झुंड होता है, राइट। जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। हेलो, गुड मॉर्निंग। बोलो बोलो। So this was the basic conceptual things about it. If you are having highest amount of pheromones on your path, the most of the ant had followed that path. If you are not having pheromones, means this path are not followed by ant. और हमेशा देखना एक के ही लाइन में सब फॉर्मुलेट होंगे, हर एक आंट अलग अलग पाथ नहीं ट्रैवर्स करेगी। हमको ऐसा लगता था, मैं छोटा था तब हमेशा मैंने दीवार पे देखा था कि आंट ट्रैवर्स कर रही है, तो मुझे लगता था दो आंट बातें करके जा रही है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन था। After that, I had learned this algorithm. I understand that the people are dropping certain chemical component जो हमको नहीं दिखता। आंट की साइज ही इतनी छोटी है तो वो केमिकल ड्रॉप करेगी, फिर भी हमको नहीं दिखेगा, right? But this has been biologically proven by them, and this is the nature's inspired thing. That's why we are following these properties of them, and we had implemented this thing in computer science. अब मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, ऑब्वियसली लोग कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? जो सबसे छोटा होगा। First they explore each and every path, after that the people understand this has been smallest path. तो ये बेसिकली सर आपको, बट दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्वॉर्म इंटेलिजेंस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस ऑल थिंग्स वी आर फाइंडिंग आउट फॉर सम टाइप ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स that cannot be solved in polynomial time, right? So what is the being characteristics of the swarm intelligence, if you want to characterize it? Just a second, sorry, call आ रहा सर है। एग्जैक्ट हेलो। क्वांटिटी तक हम्म 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 क्या टॉपिक છે? તું અહીંયા ના આપી દઈશ, મને વાંધો છે।
Conscience after this. हाँ पूछिए. हाँ बोलो बेटा. हेलो. पर स्वाम इंटेलिजेंस इज अ क्वांटिटी टैक्टिक। मतलब जब आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी होता है यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इन क्वांटिटी इन विच सेंस यू आर टॉकिंग अबाउट? सॉल्यूशन की क्वांटिटी की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मतलब जैसे कि एंड्स है तो एंड्स की जितनी हाँ वो मतलब कलेक्ट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड अबाउट दिस, दिस हैज बीन कलेक्टिव एफर्ट. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तुमने क्वांटिटी बोला, मैंने कलेक्टिव बोला. ऑब्वियसली ये एक दो आंट के केसेस में नहीं हो सकता, बट ऑब्वियसली इफ यू वांट टू डू द having quantity of the particles or we can say the agents, at that moment of time we can apply this thing. That's absolutely correct. हमने लास्ट टाइम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का भी देखा था, याद है? जिसमें हमने बोला था n फैक्टोरियल सॉल्यूशंस मिलते हैं पाथ के लिए, हम डिस्टिंक्ट पाथ के लिए. अगर मैं बोलूं उस पूल में से मेरे पास 5000 फैक्टोरियल है तो 5000 डिफरेंट पाथ है, राइट? एंड इफ आई वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व विद दिस. It will be composed by individuals. Many individuals, if we talk about ant, it's been ant. If we talk about particle, it's been particle. If we talk about agent, it's been agent. The bee colony you people told. These are the basic individuals. And the properties of it, all individuals are homogeneous. What do you mean by homogeneous? Ant है तो सारी ant ही होगी, ant और bee इकट्ठी नहीं होगी. What are the properties we need to understand? And all individuals are genius in nature. Example is your and B. You cannot have a combination of and B. Okay. No centralized control means they self-organize. Final property, the interaction between the individuals are based on some rules. These are the basic characteristics of your swarms. Composed by many individuals. Individuals means if you talk about ant colony, it's been ant. If you think about bee colony, it's been bee, right? All the individuals which we are using in our algorithm is been homogeneous in nature. Homogeneous मतलब एक ही प्रकार ना बता जो है. No centralized control over here. And if you talk about, I think you people heard about blockchain. Yes, no. Blockchain के बारे में सुना है कभी भी किसी ने word? Yes, sir. Blockchain is peer-to-peer network, right? In that also we don't had any centralized authority, right? And if you give the example of the such example where you don't had any centralized authority, it means such type of algorithm. Think about it. If you can apply this knowledge to your blockchain network or not, and the interaction between all the individuals are being on some basic rules about it, right? Now we talk about swarm chains. इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया और मैंने आपको हमेशा एनपी हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बात की कि हम एनपी हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं या एनपी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए
हम ये यूज कर सकते हैं. बट इफ आई वांट टू अप्लाई दिस थिंग इन माय न्यूरल नेटवर्क, कैन आई अप्लाई इट? If I want to apply, it's seriously not a compulsion, but if I can apply, then how I can apply on it? એમાં કોઈ જગ્યા આપણે એપ્લિકેબલ છે કે નથી એ વસ્તુ પહેલા વિચારવાની છે. and if this has been applicable, then we need to take. વોરફેર માં આ બહુ અપ્લાય થાય છે. ક્યાં આગળ? વોરફેર માં એ ખરા કરેક્ટ છે, પણ હું એવું કહું છું હવે આપણે ન્યુરલ નેટવર્કમાં અપ્લાય કરું બેટા. વિચાર કેવી રીતે આપણે આને અપ્લાય કરીએ, યુઝ કરવો છે. આની પ્રોપર્ટીઝ મને ગમી, મને એવું લાગ્યું કે આલ્ગોરિધમ એવો સારો છે કે આપણે કેમ એને ત્યાં અપ્લાય ના કરી શકીએ. એ એપ્લિકેબિલિટી શોધવાની છે. હવે મેં તને કીધું એનપી પ્રોબ્લેમ્સ, હવે બધા એનપી પ્રોબ્લેમ લિસ્ટ કરવા જઈશું તો બધી જગ્યાએ અપ્લાય તો થાય, બરાબર, પણ મારે એનપી પ્રોબ્લેમ સિવાય અપ્લાય કરવું હોય તો હું કરું, એ બી તો જોવાનું. એક વસ્તુ છે, આપણે ખબર છે વેટ ને બાયસ ને અપડેટ કરતા હતા હંમેશા. weight in bias, we are updating every time, right? The equation was w new equal to w old plus eta delta e. ऐसा करते थे हम लोग. सेम हमको बायस के लिए करना पड़ता था, राइट? and we are generating weight in bias value every time, in every iteration by iteration we are doing this thing, right? क्यों मैं इससे जनरेट नहीं कर सकता? जब जेनेटिक सिखाना शुरू किया था, जेनेटिक का बेसिक पर्पस था हम जेनेटिक से भी वेट और बायस जनरेट कर सकते थे. जनरेशन बाय जनरेशन वी नीड to generate the weight and bias so that we can read to the minima. That was the objective function of, right? Now here we are finding out the error every time. At that moment of time we need to define our strategy. So we can do this thing. We can generate the weight and bias according to the generation by generation. Last time we started with genetic algorithm, right? Every generation by generation we need to reach to the solution. कि हम solution से कितने करीब पहुंच रहे हैं या कितने दूर जा रहे हैं. जितने दूर जाएंगे उस generation को हम discard करेंगे और जितने नजदीक जाते जाएंगे उस हिसाब से हम उसको consider करेंगे and we are creating new generation for it. So that was the thing. You need to understand what exactly you are doing. And honestly, whenever you are doing such task, आप यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटेशन कर रहे हो. यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ एडिशन करना है, ये सारे कंप्यूटेशन है. Please understand this thing. Iteration by iteration, every time you are finding the error, you are finding out the multiplication value, and then you are updating that value, and again you are calculating the same procedure for it. अगर मैं कोई भी सॉम इंटेलिजेंस एल्गोरिथम से इसको करना चाहूँ तो कर सकता हूँ या नहीं, या जेनेटिक एल्गोरिथम से या डिफरेंशियल एवोल्यूशन एल्गोरिथम. थिंक अबाउट इट. दिस इज अ गुड प्रॉब्लम इफ यू वांट टू डू इट. सो टाइप्स ऑफ swarm intelligence algorithms is being particle swarm optimization PSO and colony optimization, then artificial bee colony algorithm. So these are the just a second.
No, basically all this are been your searching technique. So might be some of the searching technique you people had think about it. This all are the random searching techniques, in that you are having your swarm intelligence. And if you talk about deterministic searching technique, it's your simplex is method. So we are generally following this thing right now. We're not thinking about deterministic technique because we know that if you applying the things on NP problem at that moment of time, your deterministic searching technique is not going to provide you the solution for it. Now, what basically your search technique required? You people need to remember this thing, all the things, component about it, character type about it. What do you mean by swarm intelligence? Basically, if you think about it, these are some questions that people can ask in if the theory is there, right? Insert technique, you are having initial solution. Then obviously we are having search direction. Updation criteria. Termination condition. So these are the four things that every time we think about it, we start with some initial solution. In which direction we are flowing toward the solution, away from the solution. That's your direction. Updating the pyramids, and then finally the stopping point. At which point we need to stop. If you can say that I can allow this much amount of error and can solve it, it should be termination criteria for it. If you had a computer algorithm subject in this semester, at that moment of time you can understand NP complete problem, NP hard problem. And basically, when you start about your learning NP hard problem, at that moment of time, even you had heard about that heuristic technique. It's basically the approximation. And basically, if you talk about heuristic, is to find it out the optimal solution of the problem. Obviously, you can't talk about the computational complexity about it, but whatever the solution you are getting, it's been the best solution or not, it's been we cannot have a guarantee about it. We don't have a guarantee whatever the solution we are finding with the approximation algorithm. Here, whatever we are learning in optimization techniques, we are never guaranteed about our global minima. We're just telling that we are giving you the optimal solution, means acceptable solution. If you talk every time about that, if this is your best solution, then this would mean completely incorrect. Just a second. કઈ મીટિંગ છે?
नीट नहीं है। पति की मीटिंग 10 मिनट में કેમ પછી જાય છે તો અમે કેટલા વાગે 12 ઓકે તો હું ત્યાં આવું બપોર પછી basically this approximation algorithm you to find out the solution of an problem. Now we had learned heuristic. Now if we think about meta heuristic, why? Because this has been approximation algorithm. Now meta heuristic is basically high level strategy where we are combining the exploration and exploitation of search space. You people understand when we exactly draw the figure of the particle swarm algorithm. To combine the exploration and division of the search space. And if you talk about your meta heuristic algorithm, in that you are having evolutionary algorithm. In your evolutionary algorithm, you are having your swarm intelligence, your genetic algorithm, your differential evolution, then you are having simulated NLM, right? Now we are seeing the property of the swarm. Now what are the fundamental properties of meta heuristic algorithm, right? The objective is to explore the search space to find the optimal result. You consider optimal or acceptable solution. The second property is been, if you talk about this, we are exploring the search space and then finding out the optimal solution. Basically, concept of meta heuristic is where we are guiding our agent, ant, or whatever the particles we are having. We are guiding through the search space because obviously the people are starting to explore the search space. Then they will find it out the which solution of the which particle has been good or bad. And based on that, they are, so we are guiding
Native heuristic. So these are the fundamental characteristic of it. Now we come to the particle swarm optimization. Piezo basically invented in 1995 by Canadian. So it's not very old algorithm like your neural network and all the things. It's very new. The population based searching technique based on the position of the particle that provide the solution. And basically this particle are your searching agent. Okay, so is being evolutionary optimization technique based on the intelligence of swarm and the movement of swarm. And if in mathematical point of view, basically PSO is you to find the minimum value of the function. Okay. Okay, we'll meet in lab and hope Dhruval, you will communicate at 1:30 to all of the students that we are having lecture, expert session at 2. Okay, so please try to join at 1:55. Okay, thank you.